Hello students, welcome back to Maths Educator. Today we are going to learn our 12th standard biology and we will continue with our chapter number 12, that is the biotechnology and its application. In this chapter we have already completed about our biotechnological application in agriculture, their application in medicines. Now today we are going to learn about transgenic animals and then after we'll show ethical issues. So let's start our today's topic, that is the transgenic animals. Transgenic animals. So what is the transgenic animal first of all? So animals that had their DNA manipulated to possess and express a foreign gene are known as transgenic animals. In our previous chapter, we talked regarding our recombinant DNA technology. So what is there in that recombinant DNA technology? That we have to identify a specific gene that having a interesting characters and we transfer or insert that gene into the other organisms. So over here we manipulated that type of the animals, that DNA has to be inserted or modified somewhat, okay, but and expressing any foreign genes, and the nutrients of that animals is known as a transgenic animals. The example of the transgenic animals include mice, rats, pigs, sheep, cow and fish. They have been produced as a transgenic animals. Animal in which a segment of DNA has been physically inserted into the genome, जिसमें DNA का सेगमेंट है वो फिजिकली उसमें इंसर्ट किया गया है, एंड दैट जीनोम ऑफ अ सेल of that organism that contain that DNA segment, वो उस DNA segment को take up कर लेता है, and that segment is present in their germ line so that it can be transmitted to their progeny as per the Mendelian traits. So first our students, what is the requirement and why are these animals being produced? What is the requirement? हमें क्यों इस तरीके से ट्रांसजेनिक एनिमल्स को बनाना पड़ा है, and how can the man benefits from such modifications? So let us try and explore some of the common reason. The first reason for to identify the normal physiology and their development. Transgenic animals can be specifically designed to allow the study of how the genes are regulated. Genes कैसे regulate होते हैं and how they are affect the normal function of the body and its development. Just for example, the study of complex factors that are involved in a growth, as such insulin like growth फैक्टर, कि कैसे इंसुलिन जैसा एक ग्रोथ फैक्टर है वो स्टडी के फंक्शन को कैसे रेगुलेट करता है, वो स्पीसीज को कैसे फॉर्मेशन में हेल्पफुल है, हाउ दे आर हेल्प गिव देयर इफेक्ट एज अ नॉर्मल बॉडी फंक्शन. ओके, तो उस इंसुलिन का अगर हमें पूरा डिटेल में अगर उसकी हमें फिजियोलॉजी देखनी है, दैट विल बी स्टडीड बाय यूजिंग सच टाइप ऑफ द ट्रांसजेनिक एनिमल्स. Also, by introducing gene from the other species that alter the formation of this factor and study the biological effects, कि किसी भी हमने कोई और स्पीसीज का कोई जीन अगर हमने किसी और ही कोई ऑर्गेनिज्म में अगर हमने डाला है, सो टू शो दैट इफेक्ट, टू स्टडी द बायोलॉजिकल इफेक्ट, that information is obtained about the biological role of the factor in the body. So this is our first common reason to produce a transgenic animal, that is the normal physiology and development. Second, about the study of disease. Many transgenic animals are designed to increase our understanding that how a gene contribute to the development of a disease. These are specially made to serve as a model for human disease so that investigation of few treatment for the disease is made possible.
The transgenic models mostly like अगर हम rats की बात कर रहे हैं, so that rats has been developed for disease like a cancer, cystic fibrosis, Alzheimer's. Okay, so we have to create such models to develop the human disease as a controlled environment and make that test possible, and how that drug treatment is get available, and how they give up faster result, to study a target specific gene, and also to replicate some of that characters, some of that symptoms, the pathology of that particular disease. So these all are included into the study of disease. नेक्स्ट वन दैट इज अबाउट द वैक्सीन सेफ्टी. अगर हम किसी डिजीज के अकॉर्डिंग अगर कोई हम वैक्सीन बना रहे हैं तो वो वैक्सीन डायरेक्टली किसी ह्यूमंस पे उसका ट्रायल नहीं लिया जाता. वी हैव टू फर्स्ट डेवलप सच टाइप ऑफ द एनिमल्स, ट्रांसजेनिक एनिमल्स, सो दैट हम उसके ऊपर वो स्टडी कर सकते हैं, एंड देन आफ्टर वी यूज दैट वैक्सीन एज एन ह्यूमन पर्पस. So the transgenic mice are being developed for a use in a testing of the safety of the vaccine before they are used on a humans. The transgenic mice are being used to test the safety of a polio vaccine. जो polio vaccines अभी right now market में available है, जब भी वो polio vaccines जब बनी है, they are first tested on a mice, then they tested on a monkey. And if successful and found to be a reliable, they could replace the use of monkey to the test the safety of batch of that vaccines. Okay, so this is about the safety of vaccine that are also we do by using a transgenic animals. Next one that is about the biological product, कि हम कोई भी प्रोडक्ट जो हमने रिकॉम्बिनेंट मॉडिफाइड करके जो बनाई है उसकी भी जो हमें अगर टेस्टिंग करनी है, for that also we have to use a transgenic animals. Okay, and even we want to some important product in a bulk, we have to modify that organisms. Over here the medicines required to treat a certain human disease can obtain a biological products, but such products are often expensive to make. The transgenic animals that produce such type of the useful biological products can be created by the introduction of a portion of that particular DNA which codes for a particular product. Just for example, human protein that are used to treat the इम्फेसिमा. अगर हम इम्फेसिमा जो डिजीज है अगर हम उसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो अगर हम वो एज अ प्रोडक्ट बायोलॉजिकल प्रोडक्ट अगर कहीं से भी हम अगर लेते हैं किसी और ऑर्गन डायरेक्टली ह्यूमंस में से अगर उसको आइसोलेट करके यूज करते हैं, दैट कुड बी अ वेरी एक्सपेंसिव. सो व्हाट वी हैव टू डू, क्रिएट अ ट्रांसजेनिक एनिमल्स दैट प्रोड्यूस दैट टाइप ऑफ द human proteins, okay, by introducing that gene or by introducing that portion of gene that codes for particularly that product. ओके, तो क्या होगा कि वो जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स है वही ह्यूमन प्रोटीन को प्रोड्यूस करेगा इन अ बल्क. तो उससे उसकी जो एक्सपेंसिवनेस है वो भी रिड्यूस हो जाएगी, उसकी अवेलेबिलिटी है वो भी बढ़ जाएगी. एंड अनदर थिंग्स कि ये ह्यूमन मतलब एनिमल्स में से ही प्रोड्यूस हो रहा है तो उसकी कोई एलर्जिक रिएक्शन भी एज सच नहीं होगी. हमने जो आपको इंसुलिन प्रोडक्शन की जो मेरे प्रीवियस लेक्चर में जो बात की थी रिगार्डिंग द बायोटेक्नोलॉजिकल यूज इन मेडिसिन, तो वहां पे भी वही चीज थी कि इंसुलिन का जो यूज है वो हमें उसका जो भी साइड इफेक्ट्स थी वो हमें ओवरकम करनी थी और उसका बल्क प्रोडक्शन करना था. तो व्हाट वी हैव टू डू, जस्ट आइसोलेट दैट इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन एंड इंट्रोड्यूस दैट जीन इनटू द ई कोली एंड प्रोड्यूस दैट इंसुलिन इन अ बल्क. तो उससे दो क्राइटेरिया मतलब उसकी जो एलर्जिक रिएक्शंस थी वो भी सब रिड्यूस हो गए एंड दे आर अवेलेबल इन द मार्केट इन अ बल्क. ओके, so such type of the processes are also done by using the transgenic animals. Similar attempts are being made for the treatment of phenylketonuria and cystic fibrosis. One of the best example is in 1997 the first transgenic cow known as a Rosie that produced such type of human protein enriched milk known as a alpha lactalbumin, means 2.5 gram of that protein into a 1 liter of milk.
that are produced by using such type of the transgenic cow. Now नेक्स्ट दैट इज अबाउट द केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग. अगर हम किसी भी टॉक्सिसिटी की अगर हम बात कर रहे हैं, एज यू नो अबाउट द टॉक्सिसिटी सेफ्टी टेस्टिंग, द प्रोसीजर इज द सेम एज दैट यूज्ड फॉर द टेस्टिंग टॉक्सिसिटी ऑफ द ड्रग्स. Okay, but over here we use that on a transgenic animals. So the transgenic animals are made that carry the gene which make them more sensitive to toxic substance. हम इस तरह के ट्रांसजेनिक एनिमल्स को या तो फिर एनिमल्स को इस तरीके से मॉडिफाइड कर सकते हैं, उसके जीन को इस तरह से हम कैरी कर सकते हैं कि वो पर्टिकुलरली उस टॉक्सिन के अगेंस्ट में उसकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, तो इंक्रीज अ मोर सेंसिटिव टू दैट पर्टिकुलर टॉक्सिक सब्सटेंस than non-transgenic animals, and it gives the exact result of that toxic, either they may be beneficial or non-beneficial, जो भी उसके side effects होगी, effects होगी, जो भी उसका result होगा, that we give in a particular less period of time. So to identify that toxicity, their effect, we use a transgenic animals. So students, over here we completed about one topic regarding the transgenic animals. In our next video we will meet with our new topic, that is the ethical issue. तब तक के लिए thank you and take care.